सो ये रहा मेरा जहाज. Okay, and 1.8 meter high. ये 1.8 meter high is the, और इसमें पानी है पहले से ही, इनिशियल पानी भरा हुआ है. And this is a part of the ship. This is the key thing what he has just used, that phrase. So the vessel is 100 by 25 by 5 salt water. Kg is 10 meters. Midship compartment dB 20 by 25 by 1.8 meter, full of salt water is bilged. Find the GM before and after bilging. So let us start with initial condition. सबसे पहले तो, okay, this is initial condition. अभी कोई बिल्जिंग नहीं हुई है, कोई होल नहीं हुआ है, nothing has happened. अभी hull intact है. So let us call this as V1. So what is V1? Equal to 100 into 25 into 5. 12,500. 12,500. Let us calculate W1. हाँ जी, 12,812.5. 12,812.5. That is volume into density. Okay. Kg1 is given to us as 10 meter. The initial kg of the vessel. ठीक है, ये मेरी इनिशियल कंडीशन है. How much is the quantum of water that I have in my initial condition? How much is the quantum of water that, okay, before I go into that, अभी hull intact है. So can you tell me KB1? 2.5. हाँ जी, 2.5. everybody is okay with this? Yes, sir. Okay. Tell me initial BMT will be IT by V will be equal to B square by 12D. Will be equal to 10.42. how much? 10.42.
10 point. Is everybody getting the same answer? 25 square divided by 12 into 5. सर ये 3 डेसिमल तक लेना है कि 2 तक करना? 3 decimal? सर 417. Okay. 417. Okay. Standard this thing, 3 decimal places. All MMD this thing, all papers. Standard MMD rule. So can you now tell me KMT? $12.917 minus kg minus 10 meters will give me GMT 1, that is 2.917. Is this okay with everybody? Yes, sir. Yes, sir. All right. So अभी तक मेरा हल इंटैक्ट था, मतलब I had no breach. Now अगर अगर मेरा ये ब्रीच होता है, सपोजिंग, तो एज पर लॉजिक this pani should be able to go into this darya. Yes, sir. So I am calling it as an intermediate condition. Intermediate condition. Assume ballast pumped out. So supposing I am deballasting. Supposing I am deballasting and I am therefore creating an empty tank. Okay. Then how much is my small v, the volume of the water that I am pumping out? That will be 20 into 900. 25 into 900. 1.8. 900 cubics. Is this okay with everybody? How I got 900? 20 into 25 into 1.8. I'm assuming कि मैं ये ballast को pump out कर रहा हूँ दरिया को. Okay. So how much is the small w? The weight of the water that I am pumping out? 922.5 metric ton. $900 into 1.025. That is the density of the water inside the tank. Now, if I'm going to pump out this water, what will happen to my draft? It will increase. Decrease, sorry. It will decrease. My vessel will rise. Yeah. That means my vessel will bodily go up and the water line will come down. Agreed on this? Yes, sir. Yes, sir. My vessel will rise, or my, and so there will be a what is called as a mean rise. There will be a mean rise. I want you to calculate the mean rise. Now tell me, there are various methods to do it. Tell me one method. How to calculate this mean rise? That you know of.
from phase 1. How By, to mom- calculate? Hmm? by momentum. By momentum. What is that? We can calculate now that this much is discharged from this. Right. No, So, no. That I. how to calculate the mean rise? Now I'm checking your phase 1. How do you do it? Give me one method. There are several methods to do it. Tell me one method. टीपीसी तो नहीं निकालना सर. हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. मीन राइज W upon TPC. W upon 40 TPC. नहीं, 40 TPC नहीं, small w upon TPC. We are not calculating fresh water allowance. Fresh water. We are not. We are calculating how much is the mean rise because of this 900 cubes or 922.5 tons of water. If I am discharging, then how much will my vessel bodily rise? W upon TPC. Agreed? Yes, sir. Okay. So small w is 922.5. Sir. TPC, 1 minute. Just let me finish this. 1.025 into water plane area. Water plane area is how much? 100 into 25 upon 100. This is my TPC. Agreed? TPC is 1.025 water plane area upon 100. No. Water plane area is 100 into 25 divided by 100. 100 cancels. Calculate the mean rise. $36 centimeter. 36 centimeter is equal to 0.36 मीटर. हाँ जी, अब पूछो डाउट क्या है? डाउट नहीं सर, वो फिर जैसे हमें 900 मीटर क्यूब पता ही है सर वॉल्यूम, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम क्या ड्राफ्ट भी निकाल ही सकते हैं सर. उतना ही ड्राफ्ट मतलब वो आएगा ना 900. So that is the second method. So that is the second method. TPC का ही मत जाएगा एक्चुअली. So second method है. So basically what he is saying is another method. He is saying 12,500 minus 900 will give you the resultant volume. That resultant volume divided by water plane area will give you the draft. Yes. So वो भी एक तरीका है. सेम ही आंसर आएगा. So therefore new draft. Please silence कर लीजिए. New draft will be 5 minus 0.36 is equal to 4.64 meters. ठीक है, यहां तक ओके है. अभी मैंने खाली पानी को पंप आउट किया है एंड मेरा जहाज बॉडीली राइज किया है और इस ड्राफ्ट पे आ गया है. टेल मी KB2. Half of 2.3. new draft. That is 2.32. Is it okay? This will be the new KB. This is KB2.
Okay, I want kg. I want kg. How to find kg? kg2 पॉइंट लेने पड़ेंगे सर इसको. by vertical moments. By vertical Yes, sir. moments. Vertical moment. Okay, so let us find out. Initial displacement W1 into kg1 minus small w, the weight getting discharged, into kg of the weight getting discharged, divided by w2 will give me kg2 by vertical moments. So kg2 will be equal to w1 12812.5 into kg1 10 meters minus small w 922.5 into kg of the weight getting discharged 0.9 divided by w2. Okay, how much is my w2? That will be 12812.5 minus 922.5 11890. 11890 89. tons. Also find out V2, volume 2. Divide this by density. और 12500 माइनस 900 एक ही बात है. 11600. This will be the V2. Correct? Is that okay? Yes, sir. All right. Divided by W2 कर दो. W2 was 11890. 10.706. 10.706. 10.706 is my new kg2. Is my now I've got my tank empty. I am now floating at 4.64. Okay. So find out kb2 आ गया है. Let us now come to bmt. Is equal to it by v is equal to lb cube by 12v. Which volume are we talking about? Volume 2. Correct, absolutely right. So v2 so can I write this as a shortcut? B square upon 12 d2. Are you okay with this? How I have got it? Yes, sir. So this will be 25 square over 12 into d2. d2 will be 4.64. 11.22. 225.
So BMT is 11.225. So KB1, KB2 is 2.32. BMT is so much. So how much is KMT? So this plus 2.32. 2.839. नहीं, ये क्या निकाला है? Final. अच्छा नहीं, you have taken out. Okay. KMT 13.545. 13.545 minus KG2, which I found out was 10.706. 2.839. 2.839 839. is the GMT for GM2. So मैंने टैंक को खाली कर दिया है, पानी को. My tank is empty now. And since my tank is empty now, this becomes my initial condition of Bilging. My tank is empty. Yes. So since my Yes, tank sir. is empty, since my tank is empty, my intermediate condition, my number 2 condition is Becomes my final initial. which becomes my initial condition of Bilging. Do you all agree on that? Yes, sir. That means my W2, my V2, and my Kg2 will remain constant. Constant. Do you agree on this? Yes, sir. They will be applicable for the final condition. That means let Bilging happen. So let us write final condition. So let Bilging happen. So we allow the water to come in. Okay. So that means I'm writing W3 is equal to 11,890 because that is what my basic principles are of Bilging. My V3 is 11,600 and my Kg3 10.706. 706. ये मेरी फाइल कंडीशन के मेरे वैल्यूज हैं जो कि कांस्टेंट रहने वाले हैं. So let us allow Bilging to happen. If we allow Bilging to happen, Lost wallpoint area 0 होगा. let us calculate lost buoyancy. So lost buoyancy will be the same 900 only 900. जो हमने पंप आउट किया था. इंटैक्ट वाटर प्लेन एरिया वो 0 होगा सो वहाँ पर. हाँ बिल्कुल ठीक. सो अब ये मेरा केस नंबर 3 बन गया. जी. सो इनिशियल वाटर प्लेन एरिया दैट इज 2500 -0. माइनस लॉस्ट इज 0 0.36. इज इक्वल टू 2500. अब मेरा जहाज मीन सिंकेज करेगा. Yes. 0.36. विल बी 900 divided by 2500 is equal to 0.36. And now I will again sink. So the new draft 4.64 plus 0.36. 4.64 plus 0.36. I am back to 5 meter 5 meters. where I started. And now you can write down, hence draft remains unchanged. Hence
draft remains unchanged. So supposing I give you a question, same question, I don't ask you about GM. I just tell you, prove that when this tank DB is bilged, नहीं prove था. that prove that the draft remains unchanged. तो आपने ये करके क्लोज कर दोगे यहाँ पे केस. उसमें आप कोई जीएम वीएम नहीं निकालोगे, खाली आपको ड्राफ्ट पूछ रहा है. So this is one part of the question. Then you'll just do this stage 1, stage 2, stage 3, only the draft part of it, and just show the drafts are the same. कल एक में पंप आउट किया, दूसरे में पानी आने दिया. अब जीएम पे चलते हैं. Now let us go on to GM. So how do you find out KB3? Momentum. Moments. Momentum मत बोलो. Moments. KB3 by moments. So अब शुरू हो जाओ. KB3 by moments. So V initial मतलब V2 V2 into KB2 minus V lost. minus V lost KB lost. into KB lost Okay. plus V gain To KB gain into KB gain is equal to V final. is equal to V final, which is your V3 into KB3. Correct? So V2 is equal to V3 वो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है. KB2 हमारे पास है, V lost हमारे पास है, V gained भी हमारे पास है. Let us look at KB lost. KB lost भी पता है हमें 0.9. Let us look at KB gained. Sinkage upon Draft plus sinkage plus upon half of sinkage. So 4.64 plus half of 0.36 is equal to 0.18. So 4.64 plus 0.18. 4.64 and 18. 6 and 1, 7, 8. .82. Is KB gained okay with everybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So slowly let me put the values now. V2 11,600 into KB2 2.32 minus V lost 900 into KB lost 0.9 plus V gained 900 into KB gained 4.82 upon V final, which is again 11,600. This will give me KB3. Do this very carefully. Sir, 2.624. 2.624. 2.624. सबका सेम आ रहा है? Yes, sir. Okay. 2.624.
ओके, सो के बी आ गया मेरा। अब मैं बी एम पे आ रहा हूँ। बी एम टी इज आई टी इंटैक्ट, which is IT initial minus IT lost. 0 ना. IT lost will be 0 divided by V. V2 or V3 is the same thing. Yeah. Is equal to LB cube over 12 V2. Can I use B square by 12 D2? Same thing. Yes. So my BMT will be the same as this BMT, which was 11.225. So KMT will be KB3 2.624 plus BMT. So 3.143. So 5 and 4 9, 2 and 2 4, 6 and 2 8, 13.849 minus kg, which remains constant, that was 10.706. 3.143. 3.143. 4. Oh, so ये मैराथन क्वेश्चन है. This is a marathon question. इसमें सारे के सारे बिल्जिंग के फंडे हो रहे हैं. सर ये आता है वैसे. फाइनली पूछ ही लिया मतलब. नहीं, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए. आउटकम नहीं है ना मैंने सर कोई, इसलिए बोला मतलब क्या आउटकम है इसका? मतलब आउटकम. नॉलेज टेस्ट करनी है सिर्फ. आउटकम चलो अभी मैं बताता हूँ. पहले पहले थोड़ा सा एब्जॉर्व कर लो क्वेश्चन को, फिर इसकी आउटकम पे आ जाता हूँ. So, okay, now let's just see. So basically, I started off with a GM of 2.917, correct? Yes, sir. And my GM now, post Bilging, has increased, 3.143. correct? So I started off with 2.9, I have now become 3.1. Discharge हो. मतलब I have become more stable than before. Yeah. Meet. So अब मैं क्या करता हूँ, मैं हूँ डिस्ट्रक्टिव मेट. तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ ओवरसाइड और अब मैं 1 dB को और होल मारता हूँ शिप साइड में इंटेंशनली, जिसमें बैलेस्ट है पहले से. तो ये सपोजिंग DB3 था, मैं DB4 पे जा रहा हूँ. मैंने उसको पंचर किया शिप साइड को. एक्चुअली में नहीं करूंगा, बट मैं वैसे ही हाइपोथेटिकली ले रहा हूँ. तो मेरी GM बढ़ जाएगी. आई एम बिकमिंग मोर स्टेबल. और मैं ऐसे करता जाऊं पंचर शिप साइड में, तो मेरी GM बढ़ रही है.
What is going wrong? बट सर मैं एंगल ऑफ लॉल भी फिर बढ़ता जाएगा ना सर, एंगल ऑफ लॉल, मेरी ये जीएम तो पॉजिटिव दैट है इज भाई, डायरेक्टली ये मेरी ओके जीएम पॉजिटिव है, मैं नेगेटिव में नहीं हूँ। मेरी जीएम जो थी 2.917 पॉजिटिव थी, अब मेरी जीएम बढ़ के 3.1 हो गई है। मैं एक और होल मारूंगा वो 3.4 हो जाएगी, फिर एक और होल मार दूंगा 4 क्रॉस कर जाएगी, तो मैं तो और स्टेबल हो रहा हूँ। व्हाट इज हैपनिंग? Reserve buoyancy. हाँ, मेरा ड्राफ्ट कांस्टेंट है माइंड यू, Yes. हमने Yes, वो sir. प्रूव कर दिया है, वो हमें पहले भी पता था। खैर, जी sir. तो व्हाट इज हैपनिंग? मैं तो स्टेबल होता जा रहा हूँ। और अब मैं, चलो होल नहीं करता, मैंने पहले तो डिस्ट्रक्टिव माइंड दिखा रहा था अपना, अब मैं अपना कंस्ट्रक्टिव माइंड दिखाता हूँ। तो सपोजिंग आई एम ऑन अ वेसल एंड माय hull is intact, okay, my GM is 2.917. Now I open my sea chest valve. What am I doing? It's like creating a hole. मैंने अपना sea chest valve खोल दिया. So it's like a hole I've created on the ship side. And now my GM has become 3.15, 3.143. My GM has increased because I've opened my sea chest valve. So just by merely opening my sea chest valve, my GM has increased. I become more stable. What is happening? स्टिफ वेसल बन जाएगा। Stiff or tender is not my area of worry right now. My concern is right now something else. If I'm creating more holes on my ship side, सर what am वी I? आर हाँ जी, सर वो अगर कहीं होल हो जाए तो वो शिप का पार्ट ही नहीं रहता है, काइंड ऑफ लाइक वी आर रिमूविंग द वेट फ्रॉम द वेसल। so what am I doing? I'm losing the part of the ship to the sea. So initially what was providing me buoyancy, which was a part of my ship, is now a part of the sea. वो दरिया को जाई जा रहा है नीचे से। Okay, so what is happening to my vessel? The DB tank, which was earlier constructed to provide a double bottom to me, my vessel is now becoming a single hull with यस the entire thrust, which is now going to act on the deckhead of my DB. It is as if my bottom has been shifted up by 1.8 meters. And is my deckhead of the DB tank designed for that? To take that entire thrust नो सर। forever? Forever. No, sir. It's not. It's not. It's not. So basically, even though my GM is increasing, I'm not becoming more stable. It will be a misnomer. Even though draft is not changing, my so what have I lost in this entire process of
of creating a hole or opening up a sea chest. When I open up a sea chest, what happens? What do I lose? I have to lose something. ओएनसी लॉस हुई सर, जितना एरिया वॉल्यूम कंपार्टमेंट का Buoyancy उतना loss. वाटर प्लेन एरिया लॉस. Buoyancy lost hui. So I've lost the buoyancy. This buoyancy, So underwater volume loss underwater volume lost hui hai. means like अब तो वो पार्टी नहीं है शिप का, तो we can remove So, it. so therefore वो अर्लियर मेरे अंडर वाटर वॉल्यूम मेरे पार्ट का था, अब वो नहीं है, राइट? मेरी V1 जो थी कोई एक वैल्यू थी और मेरी V3 जो है वो सेम नहीं है, करेक्ट? 12,500 थी, Yes sir. 12,500 थी, अब मेरी 11,600 हो गई है. जैसे होल करेंगे सर फिर वो कम होती जाएगी, तो राइट. under So- basically vessel so- will get So sink. basically what will happen is gradually what is happening is I am losing what is called as loss of intact buoyancy. My hull is not intact anymore. So जिसको हम कहते हैं ना loss of intact buoyancy. I am losing intact buoyancy. Earlier जब सी चेस्ट वाल्व बंद था, जब होल नहीं था, तो पूरा का पूरा हल मेरे को इंटैक्ट बॉयंसी दे रहा था. अब जब वो ब्रीच हो गई है बाय मी ओपनिंग अप द सी चेस्ट वाल्व और a hole coming in being punctured from the ship side, which is the same thing, I am losing my intact buoyancy. Got it? Yes. क्लियर है ये? तो ये मैंने इसलिए कराया है एज अ दिस थिंग, यू शुड नो कि क्या है. कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट एटलीस्ट आई फेल्ट के इसके जो पीछे के क्वेश्चन दिए हुए हैं, जब तक ये नहीं करोगे पता ही नहीं होगा. तो फिर अब वो पीछे के कई क्वेश्चन हैं जिसमें तेल होगा, कभी पार्शियल होगा, कभी फुल होगा. तो अगर तेल है तो तेल को पंप आउट कर दो. वर्चुअल पंप आउट होता है, एक्चुअल में नहीं करते हम लोग, वर्चुअल पंप आउट. तो पहले तेल को पंप आउट करोगे, जहाज राइज करेगा, फिर पानी को आने दोगे, फिर जहाज सिंक करेगा. उस केस में राइज एंड सिंकेज इक्वल नहीं होगी. एग्रीड? Yes sir. Yes sir. जब तेल जाएगा बाहर तो राइज कमती होगा, जब पानी अंदर आएगा तो सिंकेज ज्यादा होगा, तो ड्राफ्ट सेम नहीं होगा. यस सर. तो Yes. वो भी एक फंडा है उसमें आने वाला. ठीक है. सो नाउ यू कैन गो हेड एंड प्रैक्टिस दिस एक्सरसाइज 30 इन एंटायरिटी. अब आप कर सकते हो. इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ट्रिकी है. पहले आप अटेम्प्ट एक बारी कर लो, फिर मैं उसका तरीका बताऊंगा. पहले सोचना कि इसके कैसे करना है. क्वेश्चन नंबर 5 इज एन एस्ट्रिक्स मार्क्ड क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन है, और ये आया भी हुआ है एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 5 Okay sir. वो एम्बिगुअस केस है. इट्स एन एम्बिगुअस केस क्वेश्चन, सो यू हैव टू डू दैट चेक 6 और 7 का, वो करना पड़ेगा. केस नंबर 6 या केस नंबर 7 का आपको चेक करना पड़ेगा. So to do that, then we'll discuss this. All right? Okay sir. Okay. Chalo. See you. Bye. Okay sir. Okay.
हाँ